ऑल राइट बेटा। तो टुडे वी आर गोइंग टू बी स्टडीइंग अल्केन्स। ठीक है, तो आज हम लोग जो है अल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे। अल्केन्स क्या होते हैं? दे आर बेसिकली ए फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड दिस फैमिली इज द फर्स्ट फैमिली दैट ओ लेवल्स एंड आईजीसीएसई स्टूडेंट्स लर्न अबाउट। ठीक है, अल्केन्स। ठीक है, अच्छा जी। तो अल्केन्स होते क्या है? ठीक है, तो अल्केन्स की अगर बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन वी वांट टू टॉक अबाउट, तो उनकी बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन होती है कि अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अल्केन्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब ये जो दो वर्ड्स यूज किए गए हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये जो दो वर्ड्स यूज किए गए हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये दोनों वर्ड्स बहुत कीमती हैं। सही, ये दोनों के दोनों वर्ड्स बहुत कीमती हैं। ये दोनों वर्ड्स क्यों बहुत कीमती हैं? क्योंकि सैचुरेटेड की मीनिंग भी एग्जाम में पूछी जाती है और हाइड्रोकार्बन की मीनिंग भी पूछी जाती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन की तरह नहीं लिखते इसको, बल्कि इस तरह लिख लेते हैं, सैचुरेटेड का क्या मतलब होता है? सैचुरेटेड का क्या मतलब होता है बेटा? सैचुरेटेड बेसिकली मींस व्हाट? सैचुरेटेड का मतलब होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स ओनली। ठीक है, तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing carbon carbon single bonds। ठीक है, तो वो कंपाउंड्स जिनके पास सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, उनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल्स दे लेते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल, लेट्स ड्रॉ ए मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेन। वन सेकेंड। अच्छा जी, तो जो आपके पास प्रोपेन है, वे ड्राइंग प्रोपेन। ठीक है, कार्बन कार्बन। ठीक है, लेट्स ड्रॉ। हाइड्रोजन। ठीक है, और प्रोपेन के पास इतने ही सारे, ये सारे यहाँ यहाँ हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं, राइट? ठीक है, प्रोपेन इज एन एल्केन इटसेल्फ। ठीक है, तो इट हैज अ लॉट ऑफ हाइड्रोजन अराउंड इट। टू बी स्पेसिफिक, इट हैज 8 हाइड्रोजन अराउंड इट। ठीक है, सही है, लाइक दिस। ठीक है, इट्स कॉल्ड प्रोपेन। एंड प्रोपेन इज ए सैचुरेटेड organic compound. ठीक है, why is it a saturated organic compound? Because it contains all carbon carbon single bonds। ठीक है, saturated organic compound because it contains carbon carbon single bonds। ठीक है, सही है, अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट एग्जांपल एक और ले लेते हैं। सही है, ये जो है इसका नाम होता है प्रोपीन। क्या नाम होता है इसका? प्रोपीन। ठीक है, दिस इज प्रोपीन।
And as we can see, propene contains a carbon-carbon double bond, right? Propene contains a carbon-carbon double bond right here. ठीक है, सही है. Let's draw it over. Why does it not want to draw over? All right. तो ये जो है, this is a carbon carbon double bond. All right, and because of the presence of this carbon carbon double bond, this compound propene cannot be called a saturated compound. ठीक है, सही है. तो this is not saturated, this is unsaturated because of presence of carbon carbon double bonds. ठीक है, तो this is unsaturated because of presence of carbon carbon double bond. अच्छा, अब एक आखिरी आपके पास एक और अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जांपल और लेना जरूरी है. ठीक है, और वो एग्जांपल सब क्लियर कर देगी. उस एग्जांपल के अंदर क्या है बेटा, बेसिकली उस एग्जांपल के अंदर आपको ये समझ आएगा कि हो क्या रहा है बेसिकली. ठीक है, तो लेट्स जस्ट ड्रॉ दिस मच. सही. सही, दिस इज कॉल्ड प्रोपेनोइक एसिड. क्या कहलाता है ये? Propanoic acid. Will this be saturated? So the answer is yes, it will be saturated, but the contradiction is that this contains a carbon double bond oxygen. So why is it still saturated? Saturated contains carbon-carbon single bonds. Yeah, carbon-carbon single bonds, right? So this compound also has carbon-carbon single bond. The carbon-oxygen double bond does not affect saturation. ठीक है? So we write it like this. We say that it is a saturated compound because it has all carbon carbon single bonds. और वो जो कार्बन 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 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, we can say the carbon oxygen double bond does not affect saturation. ठीक है, I hope that makes sense. एक second. Does not affect saturation. All right, so that is basically the definition of saturated. Now let's talk about hydrocarbons, because hydrocarbons is also something they usually talk about. ठीक है, तो what are hydrocarbons? हाइड्रोकार्बन्स बेटा, हाइड्रोकार्बन्स की जो डेफिनेशन होती है वो बहुत इजी डेफिनेशन है हाइड्रोकार्बन्स की. हाइड्रोकार्बन्स आर डिफाइंड एज
organic compounds made of carbon and hydrogen only. We have to add this only in this sentence. इसको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं. सही है. तो दिस इज हाउ यू डिफाइन हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है. तो आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि अल्केन एंड अल्कीन्स एंड अल्काइंस एंड एरीन्स, फोर फैमिलीज हाइड्रोकार्बन्स की होती हैं. इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, there are four हाइड्रोकार्बन फैमिलीज. ठीक है. और वो चार हाइड्रोकार्बन फैमिलीज कौन सी होती हैं बेटा? द फर्स्ट वन इज अल्केन्स. Alkanes. Good. The second one is alkenes. Then you have one which is not part of your syllabus, but you should know its name, alkynes. And then you have one which you study in the second year of A2, which is arenes. ठीक है. It is arenes. All right. So these are the four hydrocarbon families. ठीक है. There are many examples of hydrocarbons, propane and propene, जो पीछे हमने ये structures देखे थे, यही आपके पास जो हैं उनकी एग्जांपल्स है. तो लेट्स जस्ट गिव देम द हेडिंग एग्जांपल्स. लेट्स टॉक अबाउट एग्जांपल्स ऑफ अल्कीन्स. ठीक है. अल्केन एंड अल्कीन्स. ठीक है. प्रोपेन एंड propene, right? And their structures are drawn above in example of saturated compounds. ठीक है. Saturated compounds के अंदर इनके पास इनकी ड्राइंग बनाई हुई है. प्रोपेन एंड प्रोपीन आर हाइड्रोकार्बन्स, आर हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है. अम, और जो प्रोपेनोइक एसिड था वो हाइड्रोकार्बन नहीं है. व्हाई इज प्रोपेनोइक एसिड नॉट हाइड्रोकार्बन? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ oxygens, right? It contains something other than hydrogen and carbon, right? So we can also write this down. कि propanoic acid is not a hydrocarbon as it does not contain carbon and hydrogen only, right? It also contains a third element. Full stop. Any problems? I hope so not. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग वी वांट टू स्टडी, क्योंकि ये तो इंट्रोडक्शन था, अब हम बात करेंगे कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अल्कीन्स के क्या होते हैं, अल्केन्स के, सॉरी. ठीक है. तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्केन्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्केन्स. ठीक है. अल्केन्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेटा बात करते हैं. द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्केन्स इंक्लूड, द फर्स्ट थिंग इज दैट
अल्केन्स, और ये इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब मैंने पढ़ा था तो वहां पे भी ये बात थी। अल्केन्स हैव द जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, ठीक है। तो इनका जनरल फॉर्मूला बेटा क्या होता है? their general formula is CnH2n+2, right? So that is pretty important. With this formula you can calculate out however many um, alkanes, whatever the formula of an alkane is, if you just know how many carbons it has, ठीक है। Then next you need to know is that um, ये जो फॉर्मूला है इसकी आपको ये पता होना चाहिए कि लिमिटेशन क्या है, ठीक है। दिस फॉर्मूला is only applicable for straight and branched alkane. It is not applicable for साइक्लोअल्केन्स, ठीक है। ये साइक्लोअल्केन्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि साइक्लोअल्केन होते क्या हैं, तो उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। बेटा साइक्लोअल्केन बेसिकली कहते हैं एक ऐसे स्ट्रक्चर को कि जिसके अंदर अल्केन का रिंग क्लोज होता है, ठीक है। प्रोपेन ही ले लेते हैं बिकॉज प्रोपेन हमारे पास बना हुआ है, तो वी वोंट हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ड्राइंग इट अगेन, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया प्रोपेन, सही है। अम, ये प्रोपेन हो गया, सही है। अच्छा, दूसरा आपके पास जो एग्जांपल ले लेते हैं वो ले लेते हैं साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। अब साइक्लोप्रोपेन बेटा कैसा दिखता है? इट लुक्स लाइक अ ट्रायंगल, बिकॉज आपको तीनों कार्बन्स को एक दूसरे से ज्वाइन करना होता है। दैट इज हाउ साइक्लिक स्ट्रक्चर्स आर मेड, ठीक है। और फिर अब आपके पास हर कार्बन से दो हाइड्रोजन और भी ज्वाइन हुए हुए होते हैं, राइट। हर कार्बन से दो हाइड्रोजन और भी ज्वाइन हुए होते हैं। इस तरीके से आपके पास साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर बन रहा होता है, सही है। अच्छा, अब जो ये बात है इसके अंदर आपको ये नजर आ रहा है कि दिस इज साइक्लो प्रोपेन। व्हाई डू आई कॉल इट साइक्लोप्रोपेन? क्योंकि प्रोप का मतलब होता है थ्री कार्बन और सिंगल बॉन्ड्स का मतलब है कि ये एल्केन है, और साइक्लो बिकॉज ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब दोनों के अगर केमिकल फॉर्मूलाज की बात की जाए, दोनों के बेटा अगर केमिकल फॉर्मूलाज की बात की जाए, तो केमिकल फॉर्मूलाज में हम ये देखते हैं, केमिकल फॉर्मूलाज में हम ये देखते हैं कि प्रोपेन का केमिकल फॉर्मूला है C3H8, एंड साइक्लोप्रोपेन का केमिकल फॉर्मूला आपको नजर आ रहा होगा C3H6, विच मीन्स दैट दिस जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 ये किसी एक के लिए एप्लीकेबल है। अब अगर कार्बन तीन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 2 × 3 + 2, विच इज C3H8, राइट। 2 3 × 6 + 2 is 8, राइट। तो C3H8 ये फॉर्मूला है, राइट, बट नॉट दिस, विच मीन्स दैट साइक्लिक अल्केन्स उनका जनरल फॉर्मूला ये नहीं होता जो हम लोग स्ट्रेट चेन का पढ़ते हैं, ठीक है। स्ट्रेट चेन हैव अ डिफरेंट जनरल फॉर्मूला एंड साइक्लो अल्केन्स हैव अ डिफरेंट जनरल फॉर्मूला, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि साइक्लो अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? साइक्लो अल्केन्स हैव द जनरल फॉर्मूला CnH2n, ठीक है। साइक्लो अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CnH2n, दैट इज इट। बस इतना सा उनका जनरल फॉर्मूला होता है। तो पर्पल कर देते हैं, ठीक है। देयर जनरल फॉर्मूला इज इजियर देन अल्केन्स जनरल फॉर्मूला। अच्छा जी, अब उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट बात हमारी ये होती है कि अल्केन्स के फिजिकल ट्रेंड्स वगैरह क्या होते हैं, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट द फिजिकल ट्रेंड्स ऑफ अल्केन्स। फिजिकल ट्रेंड्स ऑफ
अल्केन्स, ठीक है। फिजिकल ट्रेंड्स ऑफ अल्केन्स के अंदर क्या बात होती है बेटा? वी से दैट ऑल अल्केन्स आर नॉन पोलर, मतलब अल्केन्स जो है चार्ज्ड कंपाउंड नहीं होते। ऑल अल्केन्स आर नॉन पोलर एंड डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, क्योंकि वो पोलर नहीं होते, इस वजह से वो पानी में भी डिसॉल्व नहीं होते, बिकॉज वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, इट ओनली अलाउज डिसोल्यूशन ऑफ पोलर सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। तो अल्केन्स जो है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होते बेटा। ऑल अल्केन्स आर कलरलेस, अल्केन्स की कलर भी नहीं होते। ऑल अल्केन्स आर कलरलेस, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद उनके पहले स्टार्ट होते हैं ट्रेंड्स, ठीक है। अब उनके एक्चुअल ट्रेंड्स स्टार्ट होते हैं। द फर्स्ट ट्रेंड दैट वी सी इन अल्केन इज दैट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स of alkanes increases with increase in size या mass of अल्केन, ठीक है। तो अल्केन जो फैमिली मेंबर हैं उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं उनके साइज और मास पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल इथेन, जिसका फॉर्मूला बेटा, इथेन का फॉर्मूला होगा C2H6, ठीक है, इज नहीं, हैज ए लोअर melting and boiling point than butane C4H10 फुल स्टॉप, ठीक है। C4H10 से इथेन का लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इथेन का लोअर होगा। क्लियरली आप देख सकते हैं क्यों, क्योंकि इथेन इज अ स्मॉलर मॉलिक्यूल, 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। ब्यूटेन इज अ लार्जर मॉलिक्यूल, 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड ट्रेंड, सेकंड प्रॉपर्टी। द सेकंड प्रॉपर्टी वी कैन टॉक अबाउट अल्केन्स इज दैट their flammability decreases as size and mass of alkane increases. That looked dirty. सही है। फ्लेमेबिलिटी जो है वो बेटा इंक्रीज होती है जब अल्केन का साइज और मास छोटा होता है, ठीक है। व्हेन अल्केन्स आर स्मॉलर इन साइज दे आर गोइंग टू बी more flammable. When alkanes are larger in size, they are going to be less flammable. ठीक है। तो for example, we can say that pentane, whose formula is C5H12, is less flammable than propane, whose chemical formula is C3H8, ठीक है। तो पेंटेन का फ्लेमेबिलिटी कम होगी प्रोपेन से, बिकॉज प्रोपेन इज स्मॉलर इन साइज, ठीक है। अच्छा, एक और बात भी आपको पता होनी चाहिए, फ्लेमेबिलिटी के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि एज साइज एंड मास इंक्रीजेस, ये इसी का हिस्सा है, मतलब इसी पॉइंट का हिस्सा है, अलग से नहीं है। एज साइज एंड मास इंक्रीजेस कार्बन कंटेंट इंक्रीजेस विच प्रोड्यूसेस मोर सूट एंड एश अपॉन बर्निंग, ठीक है। तो नेक्स्ट बात यहाँ पे एक और चीज लिख देते हैं, पेंटेन has a higher
carbon content than propane, and hence will burn with a more SOOTIER sootier flame and produce more ash. Produce more ash. Full stop. कोई मसला परेशानी दुख तकलीफ? I hope not. ठीक है. तो this is basically the reason why in this world a lot of alkanes cannot be used as fuels because they produce a lot of black smoke. So we break those chains down, we make them smaller, and then we use them in fuels. ठीक है. तो जैसे कि for example we know that diesel is an a hydrocarbon. It's essentially an alkane and it has long chains. All right. But petrol has a smaller chains. That is why diesel, if you've seen diesel burning, it's usually burning in trucks, etc. It produces black smoke. But petrol does not produce black smoke. Petrol does not even produce smoke. In fact, it doesn't produce much of smoke because it's such a small carbon chain. All right. On to the next thing. Volatility increases as size and mass of alkane increases. All right. Volatility increases as size and mass of alkane increases. What is volatility? First of all, you need to know the definition of volatility. I don't know if we've discussed the definition of volatility before, but let's just discuss the definition of volatility over here. Um, First, let's write example and then we can define volatility. ठीक है. जैसे कि मिसाल के तौर पे if we say butane C4H10 is more volatile, and over here I can write in bracket is more volatile, meaning it can easily turn into vapor. Easily turn into vapor than hexane. Hexane is C6H14. ठीक है बेटा. It's just about general formula. C6 hexane has 6 carbons. हाइड्रोजन जो है कितने होंगे? 2 times 6 plus 2. 2 times 6 is 12 plus 2 is 14. ठीक है. This is how you write the formulas. All right. Um, these are all the physical properties of alkanes. ठीक है. These are all the physical properties of alkanes. We also have the chemical properties of alkanes. Let's start chemical properties of alkanes. ठीक है. Chemical properties of alkanes. ठीक है. Chemical properties of alkanes. So what are chemical properties of alkanes? What are the chemical properties of alkanes? So the answer is very simple. First of all, you need to know that chemical properties, by now I think this is the last few bits of chemistry left. So by now you guys should know that chemical properties means chemical reactions, right? Chemical properties means chemical reactions. So right off the bat we can start talking about chemical reactions. So the first chemical reaction we would like to talk about is combustion reaction. All right, the first chemical reaction is our combustion reaction. ठीक है. Now combustion reaction of alkanes can further be categorized into two types. ठीक है. Combustion reaction can be further categorized into two types. First of all, we should know what absolutely combustion means. Combustion means burning. ठीक है. Combustion means burning. All right, combustion means burning. All right, and then next,
combustion, it can be of two types. So we write that down. Combustion can be of two types. Okay, there can be two types of combustion. So let's talk about the first type of combustion, which is complete combustion. All right. Um, so the first type of combustion is complete combustion. You can define complete combustion like this. Oh, I did not mean to write combustion. Meant to write complete combustion refers to burning of a fuel in excess, yeah, ample supply of oxygen. हीट कंबस्शन किसको बोलते हैं बेटा? इट इज द बर्निंग ऑफ अ फ्यूल इन एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑलराइट, अगर ऑक्सीजन की मिकदार बहुत ज्यादा है, ओपन एरिया में बर्निंग हो रही है, तो इट्स मोस्ट लाइकली गोइंग टू बी कंप्लीट कंबशन। इट्स मोस्ट लाइकली गोइंग टू बी कंप्लीट कंबशन। ठीक है भाई। तो जैसे कि मिसाल के तौर पे, अच्छा, कंप्लीट कंबशन की वजह से होता क्या है? ठीक है। मैं तो कहता हूँ ये भी डेफिनेशन में ही लिख लेते हैं, क्योंकि याद रहेगा। ठीक है। in excess, yeah, ample supply of oxygen to produce carbon dioxide and वाटर। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है कंप्लीट कंबस्शन के अंदर, एंड इनकम्प्लीट कंबस्शन के अंदर कुछ और होता है। दूसरी टाइप मैंने आपको बताई थी कि सेकंड टाइप ऑफ कंबस्शन इज कॉल्ड incomplete combustion. Right, the second type of combustion we have is incomplete combustion. After we are done with complete combustion, we shall start with incomplete combustion, but first we need to write the examples of complete combustion. All right, so let's take the example of complete combustion. Example is C2H6 plus O2 gives CO2 plus H2O। ठीक है, CO2 plus H2O। एंड नाउ यू वांट टू बैलेंस द इक्वेशन, तो मैं नीचे आपको लिख देता हूँ पहले, फिर उसके बाद हम ऊपर बैलेंसिंग करने आ जाएंगे। ठीक है। When balancing combustion equation, we should always balance in the following order। ठीक है बेटा, जब भी आप कंबशन इक्वेशन लिखें तो आपको हमेशा बैलेंसिंग इस ऑर्डर में करनी है। सबसे पहले आपको बैलेंस करना है कार्बन्स, कार्बन्स फर्स्ट। फिर आपको बैलेंस करना है हाइड्रोजन्स, हाइड्रोजन्स नेक्स्ट। एंड लास्टली आपको बैलेंस करना है हमेशा ऑक्सीजन्स को। ठीक है, ऑक्सीजन लास्ट। सही है। तो judging from that, when we go ahead and try and balance this equation,
So first I want to balance carbons, and how will I balance carbons? By putting a 2 over here. Okay, when I put a 2 over here, now I have 2 moles of carbon dioxide. All right, and now I balance hydrogens. To balance hydrogens, you need to put a 3 over here. क्योंकि यहाँ पे 6 hydrogens थे, तो यहाँ पे 6 करने के लिए 3 लगाना पड़ा. Now because you put a 2 and a 3 over here, this becomes 2. 2 times 2 is 4, and this becomes 3 times 1 is 3. 4 plus 3 is 7. So there are 7 oxygens on this side. So you want to make this side 7. So how will you make it? By putting a 7 upon 2. All right. So you write a 7 upon 2, and now your equation is balanced. Now your equation is balanced. Okay. This is how you balance the equation for complete combustion. All right. And then just one more thing for today, and then we'll end the class. Okay. We'll do incomplete combustion. Okay. Incomplete combustion. How will we define incomplete combustion, beta? Incomplete combustion can be defined as incomplete combustion can be defined as burning of a fuel in scarcity या limited supply of oxygen to yield carbon monoxide and water. All right. So in incomplete combustion and complete combustion, there is no difference, no difference, not even in the chemical equation, except for one thing. Incomplete combustion में carbon monoxide form होता है, and complete combustion produces carbon dioxide. Complete combustion produces carbon dioxide, and incomplete combustion produces carbon monoxide. All right. I hope that makes sense. Um, oops. ओके, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का फर्क है. ठीक है, जस्ट लेट्स राइट द इक्वेशन बिकॉज आई थिंक दैट इज ऑल देयर इज टू इट. राइट, या लेट्स राइट द एग्जांपल. ऑलराइट, तो we can have a difficult example. Let's say difficult in a sense, let's have a bigger carbon C6H14. When it reacts with oxygen, but the oxygen is in limited supply, it will not produce carbon dioxide. Instead, it will produce carbon monoxide and water. It will produce carbon monoxide and water. All right. Now, if it produces carbon monoxide and water, then um, how will we balance? First of all, we always balance what? We always balance carbons, right? So the rule is to always balance carbons first. Carbon पहले balance करने के लिए we'll put a 6 over here. Then we balance hydrogens. There are 14 hydrogens, so we put a 7 over here. Now there are 6 and 7 oxygens, right? 7 oxygens here and 6 oxygens here. So 6 plus 7, 13 होता है. You'll have to put a 13 upon 2 over here. And this way, you've balanced the equation of incomplete combustion for hexane. For who? For hexane. All right. So I hope this makes sense. Inshallah Ta'ala, in the next class, we'll further study other topics. Okay.